behalf of Communiqué IIT Kharagpur, we welcome you all to our panel discussion to get all your queries resolved and misconceptions cleared related to the product profile. I assure you that this event shall be very insightful and informative for everyone present here. Now let's get to know our esteemed panelists for today's discussion. We have with us Mr. Prakhar Gaur, who has been placed at Grofo. Prakhar, would you like to introduce yourself? Yeah, so hi everyone, good evening. This is Prakhar. I recently got my placement at Grofers, which is now named as Blinkit. So as an associate product manager, and I basically pursued dual degree in civil engineering. So I was from Patel Hall of Residence and I stay in Delhi. So I really appreciate this initiative of Communiqué that aims to equip the students with career building skills and much needed soft skills for the interviews. So I congratulate them as well for this wonderful initiative. Thank you, Prakhar. Next, we have Mr. Aniket Pawar, who has bagged the placement at Group. Aniket, I request you to please introduce yourself. Yeah. So hello team, good evening. So yeah, I've been placed at Grow as an associate product manager. My branch was applied geology, and yeah, I'm from RK Hall and currently I'm in Bangalore. Thank you, Aniket. And finally, we have Mr. Ishan Agrawal, who has been placed at Ola. Ishan, would you like to give our audience a brief introduction? Hello, Ishan. I think Ishan is facing some technical issues, so um, we'll get back to Ishan in a minute. So, coming to the first question, the fact that the company one starts with matters a lot in setting the pace of their career. The decisions that the aspirants should be making at the time of placements comes with a lot of pressure. With a lot of good opportunities out there, it's very common for the aspirants to have a hard time choosing. I would like to ask the panelists to give their ideas on how to sort the companies and make our lives easier. So, Aniket, would you please like to begin? Yeah, sure. So are you talking just about product companies or in general? Yeah, the product companies which come for placements are, yeah, about those companies. Okay, like what I would suggest is like ऐसे prioritize तो मत करो. Like what I would suggest is you go ahead and try for every company. So most of the thing product का ऐसा होता है कि like they will release a deck and they will shortlist on the basis of the deck. So you start preparing for the deck and like just prepare deck for every company. You don't have to be selective कि हाँ मैं ये company में apply नहीं करूँगा. Why should I do this? Just open mind and start preparing for all the companies. That's what I would suggest. Don't prioritize क्योंकि placement बहुत random चीज होती है. Like you never know कब किसमें किसका क्या हो जाएगा. चीजें बहुत जल्दी बदलती है. So keep an open mind and apply for all the product companies that are coming. That's what I would suggest. That was very insightful, Aniket. So, Prakhar, would you please share your insights on this? Yeah, so I think Aniket has already covered, like if you want to aim for product management companies, then definitely you should apply for all, because not like many companies used to visit a campus for the product profiles, and it is a highly sought after like by many people who are mostly interested in non-tech. So if you want to compare it for the generalized general portfolios, general roles, then I think like 2-3 parameters matter. One is the interest, one is your competence, and one is the long-term objective that you want to achieve in terms of career. So on the basis of that, I think मतलब अगर आपके पास product management वाली profile में if you are interested, then definitely you can also aim for the consulting companies as well, and the more generic non-tech roles like business development and stuff like that. So I mean it depends upon your interest कि अगर तुम्हारा नहीं है coding में, then you should मतलब जरूरी नहीं है कि you need to go for coding. Similarly for the competence नहीं है तो then obviously product management, and definitely जो अपना मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है दैट मैटर्स अ लॉट. Okay. That was very helpful, Prakhar.
Ishan, would you like to please go next? Yeah, sure. Am I audible? I had some internet issues. So Yeah, first, yeah. Yes. yeah. So first, let me introduce myself. I think I can start. So yeah, I graduated on with biotechnology degree, MTech BTech, and I was a boarder of Nehru College of Personnel. I've been placed as an associate product manager at Ola. So as my batchmates Prakhar and Aniket already told that like there is no prioritization on the companies, but one thing I would like to add is uh, just select those companies, just prioritize those companies in which like it in the space you want to work in. For example, Aniket has selected finance. He has in Grow. I have selected digital product. I'm in Ola, and Prakhar has selected Go first. So yeah, prepare a long-term goal like in which space you want to work in, what kind of product manager you want to be. So that is one thing I would like to add, and yeah, that's it. That was that was great, Ishan. Thank you. Yes. To get our basics right, I would kindly request the panelists to throw some light on the general selection process of the company. Ishan, would you like to start? Yeah, sure. So basically, as Aniket told before, also that all the product companies make you like give us deck like a problem statement to make a deck of like five slides or six slides, and that is the first round. The second round would be they go through a very basic screening of CV, where basically they see your past experience in product management, but that doesn't matter a lot. If you have that is well and good, and after that it's basically deck and the CV. I would say 70% of the deck and 30% of the CV. Um, Aniket and Prakhar, please add if you want to add something on this. Yeah, Ishan, I would like to add on this. So, like most of the companies, they say that they only shortlist on the basis of deck, but like we don't know what happens in their team. Like how do they shortlist it? But they say that they shortlist on the deck, and I have seen at least in Flipkart and Grow, they do not look at the CV while shortlisting. They just look at your deck. But for other companies, I don't know. Like for Ola, I guess there was a test. There was no deck for Ola. For Grofers, there was a deck. So it kind of varies from company to company. Like ये साल कैसे companies आएंगे, we don't know. But mostly deck तो होगा ही इसमें. And deck में वही like they give a problem statement. You have to properly give a give a solution. उसके ऊपर थोड़ा बाद में discuss करते हैं on the deck side. So that's it. Prakhar would like to add. Yeah, so I think Ishan and Aniket have like quite explained the product deck building experience. Post that, I think your experience in terms of product management, or maybe it can be some sort of entrepreneurial venture or anything like that, it matters during the interview, because they tend to ask the questions mostly on your experiences. If they are asking from the CV, obviously they would search for like if they could see any sort of product management internship in your CV, then definitely they would ask from that. Secondly, I think they also look for your communication skills in the selection process. Like, how are you able to communicate your thoughts? How are you able to articulate them? And finally, the selection process involves your case solving rounds as well as product thinking rounds. So it basically varies on company to company uh, in terms of the number of rounds they want to have for the candidate. For instance, in my company, it had the product deck round and followed by a one round interview. For some companies, it might be 3 to 4 rounds as well. Yeah. That was our question. Thank you. So moving ahead, what are the important things to keep in mind for the product background? So Prakhar, would you like to give us your insights on this? Yeah, so few pointers for this is that the first of all, you should understand the problem pretty well. Like, how do you understand the problem pretty well is that you can first try to identify what exactly are the user needs. Do the users even want that product or not, for example? Or what is the kind of market you are operating in? What is the kind of market you expect it to be? So couple of things like that. So just to understand the problem better, then you come to the solution. So we always aim to make the solution as structured as possible, so that it is conveyed in a more simple and easy manner to the person who's looking at the deck.
And it's always better to prioritize the solutions and give or basically back them using some data insights, and so that you can tell them like which solution can be more feasible and which solution can have more impact. So prioritizing it, backing it with data, understanding the problem better, so all of these things actually help you to make a pitch deck in a more efficient way. Finally, I think like many people also basically tend on increasing the number of slides. So more than the number of slides or the design, it is important to convey the solution that you have in your mind in a structured manner, in a well, in a good presentation. So I think that matters. That was great, Prakhar. Ishan, would you please like to go next? Yeah, sure. As Prakhar already covered everything, one thing I would like to add over this is when you have an understanding of the problem statement that you have, and you have a solution in mind. You have two or three solutions in mind, but you have to make your deck in such a way that it should show the structure as to how you analyze the problem statement, data driven, and how did you arrive to the solution. What is the journey? You should put yourself in the shoes of the users, make matlab, have a empathy for the users, like how the solution is going to affect the lives of the users, because you would be creating a lot of impact when you work in, like, for example, I'm working at Ola, so every feature we work on creates a lot of impact on the industry. 10 million users, 20 million users just use them every day. So yeah, just make a structured deck. That's it. I would like to add. That was very insightful, Ishan. Aniket, would you please make your additions? Yeah, yeah. So I guess Prakhar and Ishan have covered most of the important points. So like deck के लिए like we'll have to conduct another session कि वो कैसे बनाना है properly वगैरह. So what I would suggest is, as Ishan and Prakhar both have covered the points, I would suggest this book, Preparing for Product Interviews. उसमें they have like in detail explain किया है what goes in क्या होना चाहिए deck में, and as they have mentioned like user के point of view से feature सोचो and add something unique in that deck कि like think of something like that that would stand out from the other candidates क्योंकि Flipkart में like around 100 to 200 people submit their deck and only 10 or 12 people are shortlisted. So you need to have that element ki like how can my deck stand out, something like that is clear. What I will do is like we can like share a list of resources and books that you all guys can refer for your interviews and decks. So I will share it after this session. Okay, that's it from my end. Yeah. Thank you, Aniket. One of the very common queries among the students is regarding the CG criteria. Is there any CG criteria for the product profile? And also, how important is the personality of the candidate? Aniket, what are your views? Okay, regarding the CG, I mean, even I don't know, ऐसा कोई criteria नहीं है CG का. I mean, they don't look at the CG. I mean, no company shortlists on the basis of CV or on the CG. But I guess there were a few companies like Swiggy, they had a cutoff for 8.5 or something. There was Urban Company, even they had a cutoff for like 8.4. I mean, it varies from company to company, and it varies every placement session. I would suggest कि मतलब जिनका CG 7.5 या फिर 7 के ऊपर है, they are in the fine line. Some companies do not look at the CG at all. And regarding you said personality of the candidate, I mean the interviews are much fun for product as I like. I mean there's no pressure on you. I mean it's kind of like a conversation with you. वो तुमको सवाल पूछेंगे, तुम उनको और सवाल पूछोगे वगैरह. Like it's more like तुम कितना इंटरव्यूअर से अच्छे से वाइब करते हो. I mean that's what I felt for the product interviews. I mean just be very confident with yourself, be very articulate about yourself, and जो भी अपने CV में लिखा है वो डिफेंड कर लो. That's what I would suggest. I mean your interview will go well. That's very insightful, Aniket. Ishan, please give your thoughts. Yeah, sure. So as Aniket told that product interviews are not like एक one-on-one interview नहीं होता. It's a two-way discussion. You have to really be interactive in the interview. Be confident on whatever you say and have a backup. Like whatever you're saying, you have like the interviewer can ask you anything about like how what is your thought behind this. You said this solution. What is your thought behind this? So
just think before you answer. You can take 45 minutes, 45 seconds, or 1 minute of like silence and think about your solution and just give your answer in such a way that yeah, it makes sense and it is logical. So basically, the product interviews are very fun. Uh, the interviewers are friendly, generally very friendly, and like in the case discussions, it's not like the interviewer will not ask you question. He will ask you like what we should do next. You can you can always drive your interview. That is the great thing about product interviews, I would say. Okay, that's great. Prakhar, would you like to make any addition? Nothing much to add from my end. I think Aniket and Ishan covered it all. Okay. Okay, so moving ahead, please tell us what is the amount of weightage given to POR in product role. Ishan, would you like to start? Yeah. So the amount of weightage given in POR is like I would say a little of the POR, like a little. There is a little weightage for POR in the role. Like they would see like how well versed, how people's person you are, like how you can manage the team. Like if you have a POR of like any managing position in the like any fest or ESL or ASL, that would be very great. And apart from that, yeah, matlab it gives a plus one to your profile. But if you don't have a pure, that's not a problem, I guess. You just have to be very confident in whatever you say in your interviews. That's nice, Ishan. Prakhar, would you like to add something? So I think more than explicitly, it helps you implicitly, as in like they won't specially ask from your product from your POR section कि ये तुमने कैसे किया, मतलब the chances of asking this is very less. So in like so indirectly it helps a lot. For instance, it so having a good PR teaches you how to be confident, how to have good negotiation and communication skills, how to be a good stakeholder manager. So all of these skills actually help you indirectly while you are in a role, in a product related role. So I think more than directly, it helps you to be more confident in the interview and be more be more structured and confident in your approach. Thank you, Prakhar. Aniket, please share your views with us. Yeah, so the thing is about POR is like the product role requires a lot of leadership, I would say. You'll have to interact with a lot of stakeholders, developers, designers, content team, like business team and everything. And that's what they look for in POR. Like hold if you have held a responsible position in any cell, society or club, it kinds of like वेटेज तो ऐड होता है थोड़ा बहुत तो like they look at it मतलब they won't explicitly ask in the interview कि तुमने क्या किया था but while scanning through your resume on they look at it. Yeah, so I guess at least 30 to 40% of your CV should be POR. That's what I would suggest. अगर नहीं भी होगा, even it's not an issue अगर नहीं भी होगा फिर भी, but add something that where you have shown leadership. Anything, it could be like तुमने कोई टीम में काम किया है, you have led a team of at least five people, कोई competition जीता है, like वैसा you can frame your resume that you should show some leadership कि तुमने कहाँ पे lead लिया है. That's it. That's very insightful, Aniket. Okay, now going to the next question. What is the value of different parts of the CV? Prakhar, please elaborate on this. So I'll first list down the different parts of the CV. So it can be your the work experience in terms of the internships. Second can be your competitions. Third can be your skills. Fourth can be your POR, and fifth can be your extracurricular activities. So POR ka we have already discussed. Talking about the most important part, which I believe worked for me as well, was the work experience. So if you list down any sort of internship related to product or maybe consulting or research, so that definitely helps you. And explicitly speaking, for the product related roles, then ideally you should show some kind of experience. It can be your own startup, or it can be your own it can be some sort of internship as well, not necessarily in the product in some cases. But yeah, if it is a product management internship, then it will definitely help, because when you list down all the key points, the impact which you created, the work which you done, then it definitely helps the interviewer understand कि मतलब बंदे के पास एक्सपीरियंस क्या, बंदे को आता भी है नहीं, शुड आई हायर हिम और नॉट. तो फिर I think this definitely helps. Talking about the competitions, then you can maybe participate in some case study related competitions, because that actually adds a lot of value, because it conveys your
aptitude for problem solving, how you understand the business objectives, the users, the market, the external and internal factors, so everything like that. So competitions matters a lot, and it also shows your competitive spirit. Yeah, matlab this guy or this girl strives to achieve some sort of impact, some sort of like he's a competition driven person. So these things actually matter. Speaking about the skills, not, I mean, it depends on person to person. मतलब मैंने skills नहीं लिखी थी as such उस टाइम पे, because my personal opinion was कि अगर मैं कोई skill लिखूंगा random और उसमें कुछ questions पूछ लेते हैं, it will hurt me more than helping me. तो फिर it depends on person to person, and skills का इतना देखता भी नहीं कोई, and extracurricular activities also matter. क्योंकि just in case if an interviewer is feeling bored and let's say you have 5 minutes remaining, then out of asking any maybe serious questions, he or she might directly skip to the last section of your CV and try to make it more engaging, more interesting, and ask you, like, for example, if you have been a swimmer, if you have been into swimming, so they can ask you कि कैसे swimming करते हो, क्या जीता है अभी तक, and like any random question on that. So Okay, yeah. that's great, Prakhar. Yeah, yeah. Aniket, can you please go next? Aniket, your mic is. Just give me. Yeah, can you hear me now? Yeah, Yeah. yeah, perfect. Yeah. I guess Prakhar has covered most of the points. मतलब CV में तो, I mean, yeah, Prakhar has covered most of the points. Cool. Ishan has anything to just say then? Yeah, Ishan, please add something. Sure. Two of my colleagues have already covered everything, but एक चीज ये बोलना चाहूंगा मैं कि keep your CV as diverse as possible, because product, as Aniket told in the last question, कि product के बंदे को हर जगह से interact करना होता है, whether it be designers, whether it be coders, whether it be developers, testing teams, सबसे interact करना होता है. So just keep your CV as diverse as possible. Extra curricular points पे एक point और add करूंगा कि मैं extra curricular point एक kind of like bonding हो जाता है. Like if you're interviewer and you both play basketball, then your interview will start with, और बास्केटबॉल में कहाँ तक तुमने क्या क्या किया हुआ है, 3 पॉइंटर्स कितने ले लेते हो, ये दैट्स ऑल. तो extra color is all about fun in the interview, and competitions you can brag about, experiences, work experiences you can brag about, and PORs are basically you can take like instances पे जो questions आते हैं, तो POR अपने पास अगर होता है CV पे, so what you can do is you can give examples of every instance that you had in your experience. So that is a good thing to have in your CV. But yeah, one thing I would like to say is that keep your CV as diverse as possible. That's really helpful, Ishan. So coming to the next question, to avoid any last minute chaos, it's very important for one to know what exactly they should be doing in that moment. So what are the last moment preparation strategies and how to revise all the concepts efficiently? So Aniket, would you please like to start? Yeah, sure. Like product के लिए last moment preparation, like मतलब I would suggest थोड़ा पहले से start करना. So product का preparation ऐसा होता है कि there are 4 or 5 types of product thinking, product design, ऐसे type के questions होते हैं which the interviewers ask. So what I would suggest is form a group of like 5 to 6 friends and like रोज practice करना 4-5 interview, जो भी हो सके तुम इंटरव्यू लेना, वो तुम्हारा इंटरव्यू लोगे, एंड यू टेक गुड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम ईच अदर, एंड यू विल गेट दैट प्रोडक्ट वाला सेंस विद इन अ मंथ और सो कि लाइक हाउ टू हैंडल द इंटरव्यू, ये क्वेश्चन आएगा तो तू लाइक कैसे आंसर कर सकते हो वगैरह वगैरह. सो कीप डूइंग दैट, अभी से स्टार्ट कर लो. एंड ये ऐसा प्रैक्टिस है, इफ यू डू दिस कंसिस्टेंटली रेगुलरली फॉर एटलीस्ट 1 or 2 months ना, तो मैं लास्ट मोमेंट में मतलब इंटरव्यू मतलब इवन इफ यू स्टॉप प्रिपेयरिंग ना, लास्ट मोमेंट आप तुम कर लोगे क्योंकि तुमने ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर लिया है. सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट कि लास्ट मोमेंट तक रखो मत प्रोडक्ट का, क्योंकि तभी बहुत पैनिक क्रिएट होगा. स्टार्ट अर्ली, आराम से स्टार्ट करना, दिन में एक दो इंटरव्यू करना, एंड यू विल रीच इन नो टाइम ड्यूरिंग द इंटरव्यूज. और रिवाइज करने के लिए मैं कैसा करता था, मैं बुक में लिखता था लाइक हर एक केसेस लाइक पॉइंटर्स वगैरह. सो आई यूज्ड टू डू दिस एक्सरसाइज, मतलब लाइक एक ऐसा कोई प्रोडक्ट उठाता था मैं लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह, तो लाइक आई यूज्ड टू डू दैट, लाइक मैं उसके यूज केसेस लिखता था लाइक ये कौन से यूजर्स को टारगेट कर रहा है, कौन से मेट्रिक्स है इस प्रोडक्ट के वगैरह. आई यूज्ड टू डू अ प्रोडक्ट टेयर डाउन ऑफ सम प्रोडक्ट्स. सो
लाइक क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि लाइक फ्लिपकार्ट में कोई मेट्रिक डाउन हुआ, ओला का ये मेट्रिक बढ़ा, जोमेटो में ये हुआ। अगर तुम्हें पूरे ऐप से तुम फेमिलियर हो, सो यू कैन हैव मोर पॉइंट्स टू ऐड एंड यू कैन गेट एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। सो या दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट अर्ली, एंड मोमेंट तक रखना मत, एंड यू विल डू एब्सोल्युटली फाइन। Okay. That was very insightful, Niket. Prakhar, would you please like to go next? अनिकेत ने वैसे काफ़ी कवर कर दिया, बट जस्ट टू ऐड टू हिम, आई स्पीक मोर अबाउट द एचआर प्रेप रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। तो मैंने उसमें ये किया था कि आई मेड एन एक्सेल शीट एंड आई क्रिएटेड अ टैब फॉर ईच ऑफ द इंटर्नशिप which I had done before and which I had listed in the CV. तो उसके corresponding I tried to find out and then write कि what was the impact, what was the key numbers that I drove up or maybe made them more efficient, what was my key learnings from that internship, and what was the kind of work which I did, and finally what was the objective, the basic objective. So I tried to do this for all the internships, for all the PORs, for all the competition and like anything that I mentioned in my CV, and I tried to tweak it in such a manner that it helps me in getting in through the product management while interviews. So for example, I try to be more structured while answering the HR related questions. कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा कि व्हाट बेसिकली डिड यू लर्न फ्रॉम दिस इंटर्नशिप, तो मैंने इंटरव्यूअर को बोला कि दिस वाज माय ऑब्जेक्टिव, आई कैरियड आउट दीस 3-4 स्टेप्स एंड दिस वाज द इम्पैक्ट. So structuring your answers, the HR answers in such a way that understanding about yourself and finally understanding the objective, so it helps you implicitly in the product related cases as well, and the overall interviews. So yeah. That was very insightful, Prakhar. Ishan, would you like to add something on this? Yeah, sure. So as two of my colleagues already covered everything, one thing I would like to add, matlab, give an importance on this point is that make notes of every case that you solve. It will help a lot in the last moment revision for the interview. And second thing that I would say is कि अभी CV preparation मत करो. CV preparation last 20 दिन में करना. And हर लाइन के लिए 2 लाइन बोलने आना चाहिए तुमको. That I would say, because कुछ भी question बनता है, you have to defend your CV in everything. Like you have written 10%, you created 10% impact in something, so you have to justify that 10%. How did you arrive at that number, and what all did you do? तो ये दोनों चीज मैं बोलूंगा. एंड देन वन थिंग, लाइक एक दो चीज और बोलना चाहूँ. जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में टेक्निकल राउंड्स होते हैं अलग से, so there are some books like design of simple things and also keep that for the last 20-25 days. You can give it a read. It's like a novel or something. और इस टाइप की बुक्स लास्ट लास्ट के लिए रखो. अभी फोकस ऑन सॉल्विंग केसेस, preparing for all kinds of, like there are various cases in product, like there are 5 types of cases. So सबका notes वगैरह बनाओ, and सारे notes वगैरह रखे रहो अच्छे से highlight करके. You have to like last moment के लिए काफी काम आता है ये, because most of the cases are repeated. And मेरे को ऐसा हुआ था कि 2 guesstimates पूछे गए थे जो मेरे को याद थे by heart. So it was all acting at that moment कि हाँ, how did I arrive to solution, because I already knew the solution. One of the cases in Grow, जो मैंने Grow में भी इंटरव्यू दिया था, तो उसमें एक केस मेरे को मतलब कराया हुआ करा दिया था उसने. So I already knew the good solutions ऐसे ऐसे करके. So yeah, notes वगैरह बनाना काफी हेल्प करता है. And CV preparation is very important. Keep all the book reads, all the technical knowledge to the last. I would suggest that. Okay, that was really helpful, Ishan. Proceeding with our discussion, insting interview is the most prominent step to getting selected for a placement. So I would like to ask our panelists to give a word of advice to excel the interview. Ishan, would you like to begin? Sure. So tips for acing the product interview, I would say कि be friendly with your interview, create a bond in the first 5 to 10 minutes, and that would really help you drive the interview. मतलब you should drive your interview for the product. No, don't let the interviewer drive it, because like वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि बहुत डल सा interview हो जाएगा. The interview might be uninterested in the between and all. And yeah, that's it. Like Prakhar and Aniket, please add on this, because I only had 2 interviews. That's it. Yeah, Prakhar, please go next.
मेरे हिसाब से this thing I personally felt like I had like also sit for the I also sat for the Ebin Bay wale interviews, and those interviews actually helped me a lot in terms of how I know myself as a person. So as in ki they tend to deep dive into who are you. मतलब for example you can have some experience listed in your CV. तो उसमें वो पहले क्वेश्चन पूछेंगे, then you answer something, उसके आंसर में वो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, and ये लूप बनते चले जाता है. And you can answer this loop, you can get over this loop only if you know yourself. तो इसके लिए मतलब आई ट्राई टू थिंक अबाउट माई सेल्फ कि मैं हूँ क्या, व्हाट आई वांट टू अचीव, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ. मैं सबकॉन्शियसली जैसे लेटा हुआ मैं सोचे जा रहा हूँ, तो दिस एक्चुअली हेल्प्स मी कि दिस एक्चुअली हेल्प मी लेटर ऑन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज. सो वन थिंग आई पर्सनली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस थिंग. एंड सेकेंड इज कि एज आई हैड मेंशन बिफोर, बी कॉन्फिडेंट. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? व्हेन यू राइट द थिंग्स यू एक्चुअली नो इन योर सीवी. तो उस केस में यू डू नॉट फील दैट, मतलब यू डू नॉट हैव दैट फीलिंग कि अगर ये पूछ ले तो मैं क्या बोलूँगा, या फिर एज ईशान मेंशन कि 2-3 लाइनें तो बना के रखो एटलीस्ट. अगर वो कुछ भी पूछते हैं फ्रॉम योर सीवी, देन यू शुड नॉट बी स्टक एट दैट मोमेंट, एंड यू शुड नॉट बी आइडियली थिंकिंग. यू शुड थिंक फॉर सम टाइम, यू शुड लाइक थोड़ा सोच के आंसर बोलो, वरना ऐसा लगेगा कि तुम लिटरली लर्न करके आए हो. बट इतना भी मतलब मत सोचो कि इट सीम्स लाइक यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो हैव अ आइडियल टाइम बैलेंस इन दैट. So be confident, be structured, and think about yourself more, and most importantly be happy. मतलब डरो मत. So That's that's it. really helpful, Prakhar. Yeah. Aniket, please share your experience. हाँ, लाइक इंटरव्यू एस करने के लिए मतलब लाइक प्रखर बोला कि यू नीड कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस करने से. सो लाइक प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज. बहुत क्योंकि ऐसा होता है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते मॉक इंटरव्यूज, एंड दैट एक्चुअली अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस. बट वंस यू लाइक प्रैक्टिस, लाइक हाँ एटलीस्ट मैंने 15-20-30 मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, लाइक इंटरव्यूअर कैन थ्रो एनी क्वेश्चन एट यू. तुम्हें ये तो मतलब ऐसा आउट ऑफ द ब्लू ऐसा सवाल पूछेगा, यू शुडंट बी हेलो एट दैट पॉइंट. ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए. सो दैट्स द रीजन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा. एंड ईशान एंड प्रखर ने ऑलरेडी बाकी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा है कि लाइक इंटरव्यू में ऐसा एक वाव फैक्टर लाना कि लाइक इंटरव्यू ऐसा बोलना चाहिए, अरे लाइक ये क्या चीज़ बोल दी तूने. कोई भी वो क्रॉस क्वेश्चनिंग डिस्कशन वगैरह हो रहा है तो एक्चुअली दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. लाइक मेरे इंटरव्यू में ऐसा हुआ था फ्लिपकार्ट में कि लाइक वो बोला कि ये तो मैं सोचा ही नहीं कभी, ऐसा लाइक समथिंग कि लाइक इंटरव्यूअर को वाव करो तुम. और ऐसा वाव फैक्टर लाने के लिए द सेम थिंग, सोचो थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में. मतलब लाइक कीप ऑन रीडिंग थिंग्स. मतलब तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो छोटे मोटे ब्लॉग्स पढ़ना, बुक्स वगैरह. मतलब लाइक ईशान बोला कि इतनी ज़रूरत तो नहीं है, कुछ एसेंशियल बुक्स 2-3 तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, बट अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, क्रैक ही करना है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो ऐसा लीजर टाइम में. इतना ज़्यादा उसको टाइम मत देना, बट एज अ लीजर टाइम में कर देना. यही है बस, कॉन्फिडेंस आने के लिए प्रैक्टिस करो. एंड HR क्वेश्चंस प्रिपेयर करना अच्छे से, लाइक व्हाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट, व्हाई दिस कंपनी, लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years वगैरह. लाइक ये आंसर्स मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कंपनी वाइज, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है HR इंटरव्यूज में. एंड HR इंटरव्यू ऐसा अलग से होता नहीं है, लाइक वो मिक्स कर देते हैं. लाइक दे वुड आस्क लाइक अ प्रोडक्ट क्वेश्चन, एक गेस्ट वेट पूछेंगे, उसके बाद बीच में ऐसा एक कोई तो HR क्वेश्चन डाल देंगे. सो लाइक ऐसे बहुत रैंडम होते हैं. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एक चीज ऐड करता हूँ मैं, एक्टिंग सीख लो सब लोग, बहुत काम आएगी इंटरव्यूज में. That's really insightful, Aniket. Thank you. We also received some questions to our registration form, so we'll take up some of those frequently asked questions. ठीक है. So the first question was, what are the skills which are looked for in product companies in general? What are the skills required for that? So Prakhar, would you please like to go first? So like listing few of them. So I think the skills required for the product companies is first of all your maybe your aptitude for problem solving. कि कोई भी problem आते हैं तो how do you break it down into few pieces and then solve it one by one, and then come to a macro picture that actually achieves the objective of what was the problem. So first of all this. Second is the good communication skills, as in ki you are able to express your thoughts clearly, you are able to speak out loud, you are able to uh, articulate better, you are able to convey what your message कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो. So second is this. Third is, I mean, some sort of creativity definitely helps कि तुम like how
much out of the box you are thinking. Matlab, because just to be different from other people, you need to think a bit differently, and that is where the creativity comes in. And finally, I think some sort of awareness about the products around you actually helps. For example, they can ask you what is your favorite product, and let's say you say WhatsApp, and then they might ask you ki WhatsApp mein what are the current difficulties you are facing, and how can you basically go on improving that product. So this type say, if we have a general understanding or a more better understanding about the products around you and more awareness about it, then definitely it helps you in product related interviews. That was wonderful, Prakhar. So, Aniket, what are your views on this? या प्रखर ने जो चीज़ें मेंशन की हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक और चीज़ लाइक आई गेस वो एम्पैथी देखते हैं, दे जज यू आई गेस इसके ऊपर भी. आई थिंक सो. ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, हाउ यू कैन थिंक क्लियरली, तुम और कैसा सोच सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स कैसा सोच रहे हो वगैरह. द थिंग इज बेसिकली बस तुम्हें आई गेस इंटरव्यू के साथ वाइब करना है. इफ यू डू दैट यू विल एस इट. ऐसा नहीं है कि लाइक टेक स्किल्स भी आने चाहिए, या फिर अगर टेक तुम्हारे पास बस थोड़ा बहुत टेक का नॉलेज होना चाहिए. उसके लिए भी एक बुक है स्वाइप टू अनलॉक करके, जस्ट बेसिक मतलब क्या होता है, एपीआईस क्या होते हैं वगैरह वगैरह, दैट्स इट. और उतना भी पूछते नहीं है टेक्निकल नॉलेज में. सो रिगार्डिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, एंड बस यही है. एंड टेक्निकल स्किल्स थोड़े बहुत अगर बस पता होगे तुम्हें तो चले, और बस इतना ही है. Matlab, just adding to what Aniket said, so matlab, it's more of a kind of generalist role. You should know something of everything. That you can be able to deal with stakeholders around you. They can be tech, they can be design, they can be business people, and you should know how to reduce the gap between the business objective and the user needs and user goals. तो उस चीज को हमें अचीव करना, this is something what a product manager does. So we should think in that direction. It will help. Okay. That was really helpful, Aniket and Prakhar. So, Ishan, would you please like to add something? Yeah, one thing that I would like to add is कि तुम अपने personality में ऐसा कुछ दिखाओ कि you are capable of working cross functionally with different types of team. Ownership, second point I would say कि ownership दिखाने का कोशिश करो from your CV and past experiences, and that would suffice I guess. That's all. और जैसा अनिकेत ने कहा कि हाँ इंटरव्यूअर के साथ वाइब करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है. Okay, that's great, Ishan. So, which companies require an in-depth knowledge in product management field? Aniket, would you like to begin? हाँ, like in depth knowledge, no company expects you to have product management का knowledge. मतलब like no company expects that. तुम्हें like as ईशान last बोला कि it's a generalist role. ईशान और प्रखर मतलब वही, like you don't need to have any experience in product management. Okay, thank you, Aniket. Ishan and Prakhar, would you like to add something on this? Ishan, do you want to? Sure, I'll take it. So मतलब they don't मतलब on none of the companies expect you to have a prior knowledge of product management because it is a generalist role. They'll teach you while you work on the job. As it was said in Ola also, पहले दिन ही पूछा गया था हमको कि पहले कभी किया है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, तो हमने बोला नहीं, तो हम बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, तो काम करते करते सीख लोगे तो. So it's not about कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, it's all about कि तुम किस डायरेक्शन में थिंक करते हो, how fast are you able to मतलब नॉइज थॉट्स को हटा के कितना फास्ट तुम इंपॉर्टेंट थॉट्स को प्रायोरिटाइज करते हो और कितना जल्दी तुम सॉल्यूशन तक पहुंचते हो. और एक चीज और मतलब दे बेसिकली जज यू ऑन हाउ वेल यू थिंक, हाउ वेल यू थिंक ऑन द टर्म्स ऑफ कि तुम कितने यूजर्स को इम्पैक्ट करोगे, कितने लोगों को साथ में लेके चलोगे, बिकॉज देयर आर डिफरेंट यूज केसेस एंड ऑल ना. तो ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ मिस हो रहा हो. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स कि हाँ एवरीबडी इज कवर्ड. It's more of a generalist role, as Prakhar said. And Prakhar, please add on if I missed something. Prakhar, I please make think your Ishan and Aniket covered it all, so nothing much to end from my end. So yeah. Okay. Thank you, Ishan. Thank you, Prakhar. So, moving on, how to answer product improvement questions, like, and how to know which design will be the best and
like we cannot test infinite possibilities. So, Ishan, would you please like to go first with how to go about it? श्योर सो बेसिकली प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में तुमको पहले तो क्या वो प्रोडक्ट ऑफर करता है वो बताना होगा. देन फिर उस प्रोडक्ट के सॉल्यूशंस में क्या कमी तुमको लगती है फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव कि कौन से किस क्लास के यूजर को क्या कमी लगता होगा इसमें, एंड देन यू हैव टू गो अबाउट कि उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. So you could have basically 4 to 5 solutions or 4 to 5 improvements on that. But you also have to prioritize कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, कौन सा सॉल्यूशन सबसे जल्दी यूजर तक पहुंच सकता है. एंड मतलब बेसिकली प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस आर कि जैसे एक सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो हाउ कैन वी मेक इट बेटर, हाउ कैन वी मेक इट फास्टर. तो एक पॉइंट ये होता है कि यूजर जर्नी एक चीज होती है हमारे यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट में कि कितने जल्दी आप एक फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक पहुंचो. फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लिपकार्ट का ही देखोगे तो आप फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हो तो आपके कुछ 3 या 4 स्टेप्स होते हैं. यू हैव टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट, यू हैव टू put it in the cart, you have to apply the coupon, you have to select the address, then you have to payment, and then your order will be placed. तो ये कुछ 6 या 7 स्टेप पे यूजर जर्नी हो जाता है. बट इसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट मांगता है तो वो तुम आप यूजर जर्नी को रिड्यूस करोगे तो दैट वुड बी अ गुड सॉल्यूशन. तो कुछ इस टाइप के डायरेक्शंस में इम्प्रूवमेंट सॉल्यूशन देने होते हैं. एंड अनिकेत एंड प्रखर, प्लीज ऐड ऑन इफ यू हैव सम पॉइंट्स ऑन दिस. So yeah, I think Ishan covered the major aspect. So what I would like to add from my end is कि first of all, it is about the problem. You should know how to understand a problem pretty well, and we can have few frameworks for this as well. Like the framework which I used to use was 5W1H wala framework, which is what, where, when, who, why, and how. So this can be, for example, applied like what is the problem exactly you are trying to solve, who are the users for whom you are trying to solve the problem, and why are you trying to solve this problem, when did this problem arise first, and how are you planning to solve this problem. So if you can answer all these aspects of the problem, then you would be able to understand the problem pretty well, which is a first and the most important step while you are solving a product improvement or any sort of case in general. Second is, so after understanding the problem better, you should be able to understand the solution. So what exactly are the user needs? You should have the user empathy, as well as keep in mind the business objective as in a larger manner. And the product which you think should not be in a very micro aspect, as in not in terms of design, but you should think of a macro aspect, as in what could be the overall overview of the product, and then you can deep dive further into it and build the micro aspects. So that is definitely one thing that I think the people should focus on. And finally, prioritizing the solution, as Ishan mentioned, it's very important because you can think of many solutions, and prioritization can be on different parameters. For example, how feasible it is, what is the amount of impact it is creating. For instance, a more feasible and more impact solution is the first priority, followed by different other cases depending upon the objective which we have. So I think these all things, along with your aptitude for problem solving, along with your creativity, along with your good communication skills, helps a lot to answer product improvement questions. So yeah. That was really helpful, Ishan and Prakhar. So, Aniket, would you please like to add something on this? Yeah, yeah. So like product improvement questions are basically just product design questions only. मतलब बस उसको improvement नाम दे दिया है. So मैं suggest करूँगा कि like during interview, whenever you are solving any problem that is given कि हाँ कि Zomato का revenue improve करना है वगैरह ऐसा something like that. Like whatever you are thinking, you communicate that to the interview. लाइक जोमेटो का रेवेन्यू इंक्रीज करना है अगर ऐसा लाइक एक सवाल है तो रेवेन्यू किसके अक्रॉस इंक्रीज करना है, क्योंकि जोमेटो के 3-4 प्रोडक्ट्स है. जोमेटो प्रो है, जोमेटो हाइपर प्योर है, या फिर अभी ब्लिंकिट भी है. सो लाइक इंटरव्यूअर को समझना चाहिए कि लाइक यू आर थिंकिंग होलिस्टिकली एंड यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल द यूज केसेस जो भी है. सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट कि लाइक प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन या फिर कोई भी क्वेश्चन है, लाइक जस्ट क्लियरली कम्युनिकेट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड आस्क द इंटरव्यूअर कि लाइक ये सही है या नहीं है, एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो इंटरव्यूअर विल से कि तू ये डायरेक्शन में सही जा रहा है, यू कैन गो अहेड. अगर इंटरव्यूअर को लग रहा है कि तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ही विल टेल यू कि तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ और सोच. बस ये ध्यान में रखना ड्यूरिंग इंटरव्यू. That was really insightful, Aniket. Moving on to the next question.
What is the ideal time to start preparation for a product profile? Aniket, please go first. ओके, लाइक अभी तो शुरू कर दो, मतलब आइडियल टाइम तो अभी है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. ग्रुप्स बना लो, 4-5 लोग के, स्टार्ट प्रिपेयरिंग. क्योंकि अभी आई गेस फ्लिपकार्ट का टेक भी ये टाइम के अराउंड रिलीज होता है, लाइक अराउंड सितंबर एंड मोस्ट प्रोबेबली. सो इट्स हाई टाइम, अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन. Okay. Ishan, what are your insights? मैं कहना चाहूंगा तुरंत से पहले स्टार्ट कर लो, लेट हो गया ऑलरेडी. मैंने जुलाई से कर दी थी. Prakhar, do you have anything to add on? मैं ये कह रहा हूँ कि जो अनिकेत और ईशान वाले उसके बीच में से चालू करो, फिर वो ज़्यादा भी लेट नहीं होगा, ज़्यादा भी जल्दी नहीं होगा. बट हाँ, द ओवरऑल पॉइंट इज कि मतलब यू शुड स्टार्ट इट अ बिट अर्ली. एट द लास्ट मोमेंट पे तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसा, कि क्योंकि इट नीड्स अ प्रैक्टिस मोर देन लर्निंग, इट नीड्स सम प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस के लिए यू डेफिनेटली नीड सम टाइम, एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम थोड़ा जल्दी प्रिपेयर करो, तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. Okay, that's really insightful, Prakhar. So it's time to take up some questions from the audience. So, audience, if any one of you have any question for the panelists, please feel free to put it up in the chat box. इज देयर अ चैट बॉक्स यहाँ पे? Yeah. Okay, we'll make that accessible to everyone. Can you suggest better resources to do product cases in groups? So, like, would any of the panelists would like to take up this question, please? यार प्रोडक्ट रिसोर्सेस मतलब लाइक यू कैन स्टार्ट बाय वाचिंग सम यूट्यूब पे वीडियोस. देयर इज दिस चैनल एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट फोक्स, और एक दो लाइक तुम्हें मिल जाएंगे. बस प्रोडक्ट इंटरव्यू सर्च करना यूट्यूब पे. सो लाइक तुम 3-4 इंटरव्यू देख लो तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे होते हैं इंटरव्यूज. एंड देन जस्ट फॉर्म अ ग्रुप, एंड ऐसा करना कि मतलब ऐसे तुमने लाइक 5 या 10 वीडियो सिलेक्ट किए हैं यूट्यूब पे, तो लाइक एक बंदा एक पूरा वीडियो देखेगा एंड वो केस दूसरे बंदे को देगा. ऐसा मतलब ऐसा मत करना कि तुमने वो वीडियो देख लिया और वही केस तुम अपने दोस्त को दे रहे हो. लाइक जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम केस दे रहे हो कोई भी दोस्त को, उसको वो केस पता नहीं होना चाहिए. ऐसा. एक और चीज़ ये ध्यान रखना कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है प्रोडक्ट रिलेटेड केसेस सॉल्व करने वाले, तो इट्स डेफिनेटली बेटर इफ यू सॉल्व इट फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि यूएस बेस्ड बहुत सारे चैनल्स है. हमारे जो क्वेश्चन जनरली पूछेंगे वो इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट्स पे ही पूछेंगे, तो थोड़ा इंडियन वाला लेके रखना अपना, पहले उनको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना, उस पर जनरल भी जा सकते हो. और बुक्स तो आई गेस अनिकेत ने मेंशन कर दी थी जो थी, तो बुक्स ले सकते हो, और केसेस वगैरह तो सॉल्व करना ही है. एक बंदा एक केस ले लेगा, दूसरा one person will pose as an interviewer and one person will pose as an interviewee, and they can swap the positions as they practice more. लाइक तुम लोग कम्युनिटीज भी ज्वाइन कर सकते हो. लाइक देयर इज दिस रिले कैंपस, अभी पता नहीं है या नहीं, मैं था वो रिले कैंपस में. देन देयर इज इंसर जो लाइक वहाँ पे लाइक आते रहते हैं, लाइक डोरेमोन क्लब आई गेस, आई डोंट नो, समथिंग ऐसे कुछ तो है, समथिंग लाइक दैट. तो लाइक वहाँ पे पीपल, तुम्हारी एक कम्युनिटी बन जाती है वहाँ पे. देयर आर 300-400 पीपल कीप ऑन पोस्टिंग केसेस वगैरह. यू कैन जॉइन दैट. रिले कैंपस की तो वीडियोस भी है ना, मतलब आई एम नॉट श्योर अभी हो रहा है, लेकिन उसकी वीडियोस थे नहीं के. हाँ वीडियोस तो थी बट अभी बंद हो गया शायद वो उनका. मेरे पास है वीडियोस, इफ somebody need them, just हाँ ping me. काम वो करता है, हम वाली रिसोर्सेस कंपाइल करके भेज देते हैं इनको.
जो भी हाँ, है। Sure, sure. वो वीडियोस काफी हेल्पफुल थी। मतलब मैं स्टार्टिंग में जो देखा था सबसे हाँ, पहले हाँ। केसेस में वो रिले कैंपस की वीडियोस ही देखा था इनफैक्ट। उसके बाद मैं फिर यूट्यूब पे गया एंड देन आई स्विच टू द बुक, तो थोड़ा यार बहुत मैं पता रिले चला। कैंपस शायद बंद हो गया, अभी मैं देख रहा था। अच्छा, हो सकता है। डोरेमोन लेन एक्टिव है, डोरेमोन लेन ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब if you want to. Okay, Uh, that that, was really. Please go on. yeah. So the next question, Purushottam Kumar is asking us, can you please explain the product deck? Would any of the panelists like to take up this one? क्या पूछा, शेयर करने को? Yeah, like, please elaborate on product deck. अच्छा, प्रोडक्ट डेक पे, ओके। यार अभी प्रोडक्ट डेक के लिए मतलब अलग सेशन ही करना पड़ेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा एलोबरेट हो जाएगा। वही ये बुक है, प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट इंटरव्यूज। वो बुक का पहला चैप्टर ही है, हाउ टू मेक अ डेक। उसमें तुम्हें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, और हम भी हमारे डेक शेयर कर देंगे तुम्हारे साथ, तो तुम देख लेना। So here's a question from Saket Pandey. Like, there are a couple of frameworks which could be used for solving a product design problem. Should one stick with just one framework for a type of problem, or should one keep practicing different frameworks for that problem? Would any of the panelists please? मेरे हिसाब से मतलब लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स व्हिच यू आर यूजिंग टू प्रिपेयर योर प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट इंटरव्यूज। सो फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का फ्रेमवर्क अलग होता है, कुछ लोगों का अलग होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट, ऑन योर यूसेज एंड व्हाट आर यू मोस्ट able to use in a more efficient manner, I think you should be able to use that. For example, जैसे मैं कंसल्टिंग वाले इंटरव्यूज की भी प्रेप कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो उसमें भी मैं देखा था कि मतलब कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, बट अल्टीमेटली व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सारे फ्रेमवर्क्स लगाए, उनको ट्वीक किया हल्के से, एक ओवरऑल अपने वर्जन पे आया मैं, और अपने वर्जन का मैं फ्रेमवर्क यूज़ करता था अल्टीमेटली। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरव्यूज, तो उसमें अपने वर्जन पे और फ्रेमवर्क के आफ्टर गोइंग थ्रू लाइक कपल और लाइक 2-3 फ्रेमवर्क्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। That was really helpful, Prakhar, and I hope that clears that out extensively. So, coming to the end of the session, thank you for the meaningful and enlightening discussion. Panel, are there any some final words of advice you would like to give to the placement Janta of IIT Kharagpur? Prakhar, would you please like to start? हाँ, सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, तो आई वुड फर्स्ट से कि मतलब नर्वस नहीं होना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग हार्ड। अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जो प्रोडक्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको तो तुरंत लग जाना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड केसेस है, फॉर्म योर ग्रुप, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एंड एचआर प्रेप को भी नेगलेक्ट नहीं करना। लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट तक बचा के रखते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ जाके आंसर ही तो बोलना है, बट नो, उसको भी थोड़ा प्रेप करके रखना है। यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट, यू वांट टू फील स्ट्रक्चर्ड, more articulated, more confident in your interviews, and for that you need to practice from some time before the actual interviews. दूसरा ये है कि मतलब कभी कभार थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है। लोगों को ये लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ, ऐसा नहीं सोचना है। मतलब कंपनीज आते रहेंगी, जाते रहेंगी। डेफिनेटली गिव योर बेस्ट, एम फॉर द बेस्ट कंपनी विच यू आर इंटरेस्टेड द मोस्ट इन। उसके लिए फाइट मारो, बट इतना स्ट्रेस आउट भी नहीं होना। बीच में मतलब थोड़ा फन, मतलब देयर शुड बी सम फन एंड देयर शुड बी सम एक्साइटिंग पार्ट अबाउट द लाइफ एज वेल। उससे थोड़ा रिफ्रेशिंग यू फील करोगे, और फिर अपना बेस्ट दो, जितना फाइट मार सकते हो मारो। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली इंटरव्यूअर के साथ बना के रखो थोड़ा लास्ट में, तो वो काफ़ी मदद कर लेती है। सो या That was really helpful, Prakhar. So, Aniket, would you please like to go next? हाँ मतलब इन जनरल, मतलब हाँ यार, मतलब लाइक यू विल फील नर्वस, लाइक यू विल फील डिजेक्टेड कि यार मेरा इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं आया, ये नहीं आया। एंड दीज आर नॉर्मल फीलिंग्स, मतलब लाइक ये सबके साथ ही होगा। बट इन द एंड ये याद रखना, तुम्हारी प्लेसमेंट लगने वाली है, मतलब ये तो होने ही वाला है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कभी लाइक तुमने प्रोडक्ट के लिए बहुत प्रेप किया, इन द एंड नहीं हुआ, वर्स्ट केस वगैरह, यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर एनालिटिक्स रोल वगैरह, मतलब लाइक ऑलवेज, मतलब एम करना एनालिटिक्स या फिर कोई और रोल के लिए, फाइनेंस वगैरह, बैकअप तो रखना ही। मतलब डोंट गो ऑल इन फॉर प्रोडक्ट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट, तुम्हारा एनालिस्ट का प्रिपरेशन तो हो ही जाएगा, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह का, एंड यू विल क्रैक दैट। बस यही है, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक इंटरव्यूज करते रहो। जैसे प्रखर ने बोला, एचआर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके भी मॉक प्रैक्टिस करना। एंड इन द एंड जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब
That's it. That's great, Aniket. So, Ishan, would you please share your insights? हाँ यार, मतलब दो चार चीजें, कपल ऑफ थिंग्स आई वुड लाइक टू ऐड इज कि एक स्ट्रक्चर बना के रखो अभी कि जैसे पूरा दिन ऐसे मत नहीं कि रैंडमली अनऑर्गेनाइज पढ़ाई नहीं करनी है। थोड़ा टाइम तुम बांटो एस्टिमेट्स को, थोड़ा टाइम तुम बांटो कोडिंग को, थोड़ा टाइम केस सॉल्विंग को बांटो, थोड़ा टाइम मॉक इंटरव्यूज को बांटो। देन फिर अभी तो क्या है कि सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करना है तुमको। देन फिर अक्टूबर का महीना आएगा, तुमको कॉन्फिडेंस गेन करना होगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मॉक इंटरव्यूज से। लोग मॉक इंटरव्यूज की अहमियत समझते नहीं है और वो बिना ऐसे ही पहला इंटरव्यू चले जाते हैं बिना मॉक इंटरव्यू के। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको एक्चुअली पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे उनका कमी है, वहाँ पे उनका कमी है। तो मॉक इंटरव्यूज कर लो। एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैं ये बोलूंगा कि अकेले प्रिपरेशन मत करना, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे। हमेशा 5-6 लोगों का ग्रुप बनाओ, हमेशा उसमें प्रिपरेशन करो। बिकॉज तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम 5 लोग का ग्रुप बना के 5 केस एक बार में तुम कर सकते हो 1 घंटे के अंदर। और तुम अकेले करोगे तो तुमको 5 घंटे लगेंगे वो एक एक करके गो थ्रू करने में। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ इज लाइक डी स्ट्रेस रहना। और अभी वो काफी नर्वसनेस रहती है, काफी फटी रहती है लोगों की कि हमारा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बट एक चीज याद रखना यार, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और तुमको लग रहा है कि डे 10 तक खिंच जाओगे, लेकिन तुम डे 2 पे निकल जाओगे, ये श्योरिटी है। Thanks a lot, Ishan. So, I'm sure our audience got all what they needed, and they will definitely keep all your advices in mind. What an enriching session it was. We would like to express our sincere gratitude to the panelists, Prakhar, Aniket, Ishan, for giving us this precious time to make this session possible and sharing all the valuable insights, strategies, and experiences with us today. I hope this seminar was beneficial for all of you. And with this, we mark the end of Placement Bootcamp Series 2022. On the behalf of entire Communiqué, a heartfelt thanks to everyone who has attended this seminar or our previous seminars for making this series of us a humongous success. We're looking forward to coming up with more exciting series which will prove to be helpful to our dear KGP Janta. This brings us to the end of the event. Thank you and have a pleasant day.